Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Salman Masood and you are watching the Conspiracy by Ideas Solution. Okay guys, so this is the part 3 of our video series of React. In this video, we will briefly discuss about the React component, that what is React component. Okay, in the earlier days of development, when a developer wants to develop a single page application, he has to write so many code on a single page. It was like traditionally DOM feature, we have to write so many code on a single page. If the problem was, if we have any mistake on that page, we have to find it manually, and it was really hectic process to find out the bug or some syntax mistake on a single page where you are writing so many code and so many business presentation logic. So we have to, it was really hard to find out without using the component concept. So this component concept comes to overcome this problem, and it was originated by React. So basically, what is component? A component is just considered as a core building blocks of a React application. It makes the task of building UI much easier. Each component consists in the same space, but they work independently from one another and merge all in a parent component, which will be the final UI of your application. Okay, you can consider this example. Suppose you are developing a single page application, but if you have to write all the code in a single page, that would be hectic for you, that would be difficult for you. You will do what? If you are a React developer, you are selecting React to develop that single page application, then you will break that single page into components. You will think like, okay, this part, in which part, the header part, I will fetch the data from this API, and I will design it separately. I will make a different component. You can see the box 1, it is a component. The box 2 is representing another component. 3 is a sidebar. 4 is something that is bottom of the page, and 5 is the side of the 4. Okay, I think you all are getting my point, that what is the need of that component based application. So what we do, we divide the application from a single page application to the component based application, and that would make your work easy. तो उर्दू में बात करें जी अपनी ऑडियंस के लिए, तो बात यह है कि डेवलपर को बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था पहले एक सिंगल एप्लीकेशन को बनाने के लिए, सिंगल पेज एप्लीकेशन को बनाने के लिए। और अगर कोई मिस्टेक हो जाती थी या कोई भी सिंगल पेज में, जाहिर सी बात है आप काफ़ी लाइन का कोड लिखेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगी। और आई मीन मुश्किल इस सेंस में कि कोड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है, इंसानी आँखें तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। कभी कोई बग आ गया तो आपको ढूंढने में, मैनुअली सर्च करने में काफी प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हमने सोचा कि भाई एप्लीकेशन को क्यों ना ब्रेक कर दिया जाए एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर। जैसे हमारे पास कोई भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ आ जाए, जैसे ये अगर यूट्यूब ने कोई पेज बनाया तो ये आप देख सकते हैं, ये साइड नेविगेशन अलग है, बीच में ये वाला डबल अलग है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पार्ट को अलग से कंपोनेंट बनाऊंगा, एक अलग कंपोनेंट बनाऊंगा। आप कंपोनेंट को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे अभी, ठीक है। और साइड में एक अलग कंपोनेंट, और उस सबको मैं एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर, पेरेंट पेज के ऊपर कह लें आसान अल्फाजों में, वहां रेंडर करा दूंगा, ठीक है। तो जैसे हम इसी के अंदर पार्शियल व्यू का एक कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली यहाँ पर रिएक्ट के अंदर कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है। सो इफ यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट देन यू कैन सी द कोड। ओके, last time we have discussed about the folder structure, the directory of React. तो ये हमारा जो सोर्स फोल्डर होता है, the folder name as source, which is containing all the files that we have to work on. और मैंने पिछले पार्ट में कहा था कि हम बाकी चीजों को नहीं छेड़ेंगे, we will not make any changes in this public folder, we'll just come to this app.js. okay,
अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 फाइल्स आपको यहाँ पे जो है काम की नजर आ रही है, बिकॉज अभी हमने सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाया हुआ है ऐप, और वो ऐप कंपोनेंट कहाँ कॉल हुआ है index.js के अंदर. यू कैन सी index.js, ये देखें, और यहाँ पर बना हुआ है ऐप. अगर इसी तरह से मैं आपके सामने एक और बिल्कुल सेम इसी तरीके के एक और बना दूं और उसको कॉल कर लूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मान लो अभी देखें एप्लीकेशन रन हुई है. ये एक एप्लीकेशन रन हुई है और मैं चाहता हूं कि नीचे मेरे पास एक और कंपोनेंट आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर मेरा नाम लिखा हो, तो या हमारे चैनल का नाम लिखा हो. तो चलो इस एग्जाम्पल करते हैं. लेट्स डू इट. ओके, आई विल डू व्हाट, आई विल मेक अ सेपरेट कंपोनेंट टू display on this page. Just consider it as a footer. Okay, I'm willing to place a footer at the bottom of. I will make a separate component for the footer. Okay, so we'll just right click on this and we'll add a new file, and I will name it as footer.js. And I'm not going to write so many code right now, so I will just do what, I will copy all the things from app.js. This is for the learning purpose. You can, I'm expecting my audience that you are very new to React and you are learning first time. So if you are expert, then you can skip the video, don't have to watch all these basic things. Okay, what changes I need to make, I will have to remove this logo because I'm not willing to show the logo on this page. हमें लोगो की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ से हटाने वाले हैं. और अभी CSS की ज़रूरत नहीं है. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू शो द CSS ओवर हियर, सो आई एम गोइंग टू रिमूव इट. एंड एज यू नो द कंपोनेंट नेम इज footer, so I will have to replace the app with footer. अच्छा जी, है क्या, this is like a functional component. Functional component क्या होता है, we'll discuss in the next video. Don't worry about this. Okay, I just need to make a footer. So okay, another change what I have to, I will just copy this from here and will paste, save, and remove all the code. Okay, sorry, and remove all the HTML written in this. I will remove all these HTML that is written in this written method, and I will download some better footer from W3 School or any other source and will paste it for you. Okay, footer. Okay, I just searched footer W3 School because this site is containing some kind of default template. Okay, as usual my internet is not working, so I have to wait for this. Okay, don't worry, I'll just copy and paste the footer. Okay, till my internet comes, I code by myself. I will write div. Okay, and in that div I will show a heading in which I will write the name of my channel, the concept academy by ideas for solution. Okay, very good, fine, and we'll name it as class name, or as class name as footer. Okay, one more thing, you are learning the new thing. You cannot write as class when you are defining an HTML attribute that is class. You cannot write just class in React, because there is a keyword in React named as class, so we cannot write as class. We have to write class name in place of class. जैसा कि HTML के अंदर हम लिखा करते थे किसी भी क्लास का एक एट्रीब्यूट, अगर हम उसको कोई क्लास असाइन कर रहे होते थे तो HTML के अंदर तो चल जाता, बट React के अंदर एक कीवर्ड है, हम उसे नहीं इस्तेमाल कर सकते क्लास को. ठीक है, एक एरर आएगा. तो आपको क्या करना है, क्लास यूज़ नहीं करना है, क्लास नेम यूज़ करना है उसकी जगह. ठीक है जी, तो ये इस वीडियो का खास लेसन है, क्लास नेम. ओके फाइन. नाउ आई हैव टू राइट अ CSS separately for this. So I will just right click on this source and
it would be better if I make a folder for that footer. I'm going to separate this because future में आसानी होगी, and I will drag this footer.js into this folder. Okay, fine. Are you sure? Yes, I'm quite sure. Okay, I moved it, and I will add a new file that name is footer.css, and I will place the CSS of this here dot footer. Okay, class doctor width is 100%, height is around like 100 pixel would be enough. Okay, and the background color would be just anything because we are just here to test aqua. Okay, I personally don't like aqua color. Okay, fine. I just need to import this footer. Okay, don't forget to save. As you can see, this white dot is representing that you haven't saved the file. When I save it, it goes disappeared. Okay, import. Okay, dot dash footer dot css because it is in the same directory. The footer.js and footer.css is in the same directory, so I have to write this. If you are confused, then you can see from here because these two files are in the same directory. So I will have to do what? I will show it in the app. So I have to import it in the app component. Import footer from dot dash. Okay, now you can see the folder name as footer that I have created, and in that there is a JS file footer.js. Fine, and I will do what? I will just place it in the last as footer. Okay, now you can see this is the component which I have made. Okay, fine. I just need to see the application now. Okay, when I refresh it, actually I don't have to refresh it for. Okay, fine. You can see it's showing me the Concept Academy Ideas solution. Okay, what we concluded, we have seen the use of component, और हमने सीखा कि कंपोनेंट का क्या इस्तेमाल है. आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ बहुत सारा कोड है. बहुत सारा कोड मतलब अभी तो छोटा सा मतलब हो भी सकता है इसमें बहुत सारा कोड, बट यहाँ पर क्या है, अगर कोई एरर होगा तो मुझे मालूम होगा कि भाई मुझे कहाँ जाना है और सेपरेट कंपोनेंट के अंदर जाके मैं वो काम कर सकूंगा. So my work will get easy. Okay, that's all for this video. The video is getting long, so I don't have to take your lot of time. Okay, that's all for this video. प्रैक्टिस करें, फीडबैक दें और ज़रूर कमेंट करें. यार ऑडियंस रिटेंशन बहुत कम होता है. यू पीपल आर नॉट इंटरेक्टिंग विद मी, सो भाई वीडियो बनना बंद हो जाएगी अगर मैं बूस्ट नहीं करोगे. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. हाफिज़.